लेकिन चले अब तो अनफॉर्चुनेटली लेकिन अब तो उनका जो रिस्टोरेशन टाइम चल रहा है, इस Yes. पर्सनालिटीज रिस्टोरेशन टाइम, आपको क्या लगता है कितना टाइम लेंगे वो? 5 हफ्ते हो गए इमरान को हमारे पास वापस आए एंड वी आर इन द 6th वीक। Yep. तो इमरान की जो रवानगी से बोलने की सलाहियत है वो भी 40-45% वापस आ गई है। चले माशाल्लाह, that's इमरान good. 84 केजी उसका वेट था, तो जब इमरान हैज़ टोल्ड मी कि वो 52 तक गया और हमारे पास 62 पे 62 पे वापस आया। नाउ इमरान इज़ अबाउट 69 70 7-8 केजी उसने दोबारा वेट यानी भी कि गेन he's किया है। recovering, he's in a recovering सो period. उसकी स्पीच थेरेपी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, उसकी जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो मुसलसल हो रहा है। दो देयर हैव बीन कॉम्प्लिकेशंस दैट वी आर फेसिंग एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डिस्क्लोजिंग इट ऑन द नेशनल मीडिया कि जब से इमरान वापस आया है ही इज़ हैविंग सवेयर अटैक्स, उसको फिट्स पड़ते हैं बड़े सवेयर नेचर के, विच अगेन फर्दर कॉम्प्लिकेट्स हिज सिचुएशन। बट अगेन इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि उसके तमाम डॉक्टर्स जितने भी हमने एक प्राइवेट मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया उन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स का एक क्यूमुलेटिव असेसमेंट है कि एट दैट पॉइंट इन टाइम उनका 5 हफ्ते पहले यही था दैट ही विल टेक अबाउट 3.5 months, out of which about 5 weeks have passed. Who's his psychologist? No, I would not be revealing the details of any of his doctors because हमें Okay, इस okay. वक्त जो I हमारे get it. I साथ get it. I get it. I completely understand. what we have been through No, is no. of a very very I would different not. nature. I would not like to, become that black ant हाँ नहीं who is, trying to seize his psychological हाँ sessions नहीं and वो हमने anything. उसका I would rather उसका wish him डाटा best जो of है luck. डाटा प्राइवेसी जो है वो वी Yeah, आर that's completely प्रोटेक्टिंग हिम fine. एंड जेलसली गार्डिंग इट। तो इसके अलावा उनकी क्या रूटीन है आजकल? हाँ, व्हाट ही डज़ मोस्ट ऑफ द टाइम है इसके आजकल बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो फैमिली के साथ गुजार रहा है। Okay, nice. नमाज़ें पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, किताबें पढ़ पहले रहा भी है। तो पढ़ते ही होंगे ना? नहीं पहले पढ़ता था लेकिन अब चूँकि उसके पास टाइम है So he is like हाँ, more into, ही इज़ okay. मोर इनटू बुक्स नाउ। But पहले तो obviously it's part of his journalism that you have to keep yourself active. अब he's extra free, so maybe. हाँ, तो अभी उसको मैं तो when he came back and I specifically advised him कि यार खुदा का वास्ता है टेलीफोन के करीब नहीं जाना, खुदा का वास्ता है टीवी नहीं देखना ज़्यादा, एंड अगर देखना भी है तो वॉच some movies on the Netflix, बच्चों के साथ बैठ के कार्टून engage देखो। your time and हाँ, play the games with the kids, horse riding कर लिया करो, and he's good going most of idea. the time to his farmhouse, spending the time with his much needed time with his family, बाजी के साथ, बेगम के साथ, पेरेंट्स के साथ, Good, good. and he's just getting back, वो 15-20 साल पहले दोनों ही हम इतने को ज़्यादा बिजी नहीं होते थे, and we used to spend a lot of time with our family, बट जो ही दुनियावी नफ्सा नफसी के दौर में गए हैं तो हम फैमिलीज़ को ज़्यादा टाइम देना भूल गए हैं। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे कभी दोबारा इमरान पे ऐसी सिचुएशन आए, बट नेवरदलेस अभी उसके पास एक विंडो है बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल सिचुएशन कि अब वो किसी हद तक जो है वो टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। No, that's great. Getting to know that he's getting better day by day, Yes. and we also wish him best of luck. Why not? Thank you. But on the other side, I would like to know, is he in a stage to pursue his career in future? Of course, there is no second question on that. I mean, there is this, a myth. So he's coming spun back. Around. Why not? I mean, listen, anybody, कोई भी अगर ये सोचता है कि Vengeance. इमरान रियाज का कोई सहाफ़ती करियर ओवर हो गया है, so I mean, we should all come out of this, a dream. इमरान रियाज का जो सहाफ़ती करियर है अभी वो बाज़ाब्ता तौर पर फिर दोबारा शुरू करेगा। हम उसकी सिर्फ सेहतमंदी का, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर जैसा कभी वो इमरान रियाज खान था, हमेशा से हंसता खेलता मुस्कुराता बड़े जानदार तरीके से अपने तज्ज़िये देता और अपनी बड़ी धड़ल्ले से सहाफ़त करता हुआ वो इमरान रियाज खान आपको वापस आएगा। ऑफ कोर्स विद फार मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स, और बड़े सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाते हुए ज़िम्मेदार भी जो है वो इमरान वापस आएगा। बाय एंड लार्ज जो है पाकिस्तान के मीडिया को एक मैच्योरिटी की ज़रूरत है, और जो मैच्योरिटी इमरान रियाज से एक्सपेक्ट की जाती थी या अभी भी की जाती है, वी विल इंश्योर इंशाल्लाह कि वी हैव हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन दैट। मीनवाइल बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट टाइम एंड अगेन कोई इक्का दुक्का कोई 10-15-20 मिनट किसी वक्त इस पर भी बात होती है, एंड ही विल बी not only coming back on screen, and he will inshallah perform his journalistic duties as soon as he will get back, or inshallah I am hopeful about मेरा ख्याल से not more than 2.5 months, इससे ज़्यादा टाइम होना नहीं चाहिए, because जिस तरह से वो improvements अभी शो कर रहा है minus the complication part, inshallah he'll be back. तारीख का एक अनोखा आदमी है इमरान रियाज खान, जिसको 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम ने तकरीबन जो है वो एक डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना एक ऐसा ख़ास मौजज़ा दिखाया है कि वो 24 करोड़ अवाम ने ये अज्यूम कर लिया था कि ही इज़ नो मोर, पर अल्लाह ताला ने उसको हमारे सामने जो है वो खैरियत और आफियत से वापस भेजा है। During the process, उनकी
बाजियाबी के प्रोसेस के दौरान कभी आपकी उम्मीद टूटी हो या नहीं, कभी ऐसा लगा हो कि वो वापस नहीं आएंगे? not at all, not even once. I'll be very honest, because there are things that I cannot even quote at this stage, because Imran's cases are, at least one is in my knowledge, it is still pending. और उस तरह के केसेस में, एंड आई वुड नॉट बी jeopardizing, and I would not be causing any prejudice to those pending proceeding. लेकिन there are a lot of things that I know, at the back, for which I think now is not really a relevant time. लेकिन मैं I have those, I'm saving all those things, as a privileged communication. कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी बातें हैं that I had, I was very confident. If you remember, the public of Pakistan has made me a punching bag because of only my one continuous consistent claim, जिंदा है, खैरियत से है. Here I would like to ask another thing कि जब वो वापस आए तो वो जिस हाल में वापस आए थे तो उसकी तवक्को थी आपको? नहीं, बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी. You see, I mean, ठीक है, we understand कि during, the period of confinement, a lot of, methods of investigation are generally being applied, in lot of cases. So we know, how does it work. But nevertheless, जो कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी के साथ मैं ये बात कह रहा था, व्हेन आई वाज टेलिंग कि वो जिंदा और खैरियत से, दैट मींस ही इज अलाइव एंड वेल. आई रिप्रेजेंट, a record number of bureaucrats in Pakistan. I represent, all the who's and what not in Pakistan. So I have a lot of, my close friends that are very close to my heart, as That's well your as, certain yeah. experience, which And comes up then, at the table. and then I know, how does it work, with the state policies, with, the state, effectiveness. मुझे पता था, I was, completely aware of, the details of Imran's whereabouts, which I never disclose and I will not disclose for a very very long time. But मुझे एतमाद था कि अल्लाह के हजूर इंशाल्लाह कि हमारे पास वो खैरियत से वापस आएगा, और देर सवेर हो सकती है, और वो हुई.